Okay, once again, I welcome you all. So, first of all, let me clarify. Did you gone through our previous session? Yes, Okay. So, do you have any kind of query or any kind of doubt at this moment? Like, it can be a basic one or it can be some kind of critical one. Any query is welcome. Let me take some 5 minutes to clarify all those doubts and queries. Then we will move forward with our new session, because things are getting complicated now from this onwards. So we will try to accomplish by learning previous or by clearing our old concepts. Yes, guys, please respond. Okay, one, you want to go ahead with a ledger calendar? Cool. Let me brief you once again. So first of all, let me share my screen. Okay, so my screen is visible, please confirm. Yeah, okay, perfect. Let me move to ledger calendar. Can anybody please assist me the navigation path for ledger calendar? I just want to check your knowledge. Please open up your mic and respond with your voice. That would be good. That would be very helpful for me. Can anybody help me the navigation path for ledger calendar? So it was general ledger. Then, until we are pro in the system, what we need to do, we need to collapse all the menus and check one by one. That would be a very easy process for us to navigate to a certain module or sub module. So we will go to calendar and we need to go to ledger calendar. So unlike fiscal calendar was something like what we were supposed to do. Let me duplicate the tab just to equate the two options. Just for the sake, let me go to general ledger calendar, fiscal calendar. See, there is a very thin line difference between these two things, although you can find the major difference without any issue. So first of all, we need to create a calendar. The calendar means the operating period where our business transaction will take place throughout the year. So based on our country, this calendar will be configured accordingly. For example, if we take an example of India, so in most of the cases, or in all cases, Indian business run from the month of April till the next year of March 31st, right? But in case of US, it is from 1st January to 31st December. So accordingly, we need to create a fiscal calendar, and then we need to define the period, right? So after defining the period, the major role comes in this ledger calendar. So what we need to do, we need to go ahead and assign this fiscal calendar to a legal entity. Then only you will be getting all the legal entities which were linked to this particular calendar in this space, particularly in this space. Okay, since the headers are their legal entities. So until now, we have not linked any calendar to our particular legal entity, that is LT1.
So for this reason only our ledger calendar is blank. For that reason I will take example of different calendar. Say for example fiscal year, which is same as our calendar only. The only difference is the fiscal year fiscal calendar is linked to some legal entities. So you can check which legal entity once we select this fiscal calendar. So see, there are different entities or the organization that have for which this fiscal calendar is linked or connected to the respective legal entities. So let me take one example of this legal entity known as USMF. So what we need to do in ledger calendar, first of all, you should know what is the purpose of this ledger calendar. So the purpose is very simple. You can control the period status as well as you can assign permission to a respective module in regards to a particular period टू ए ग्रुप ऑफ यूजर्स. ओके, हमने अभी तक क्या किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीरियड स्टेटस को मेंटेन करना है. फॉर एग्जांपल अभी पीरियड वन अगर मेरा ख़त्म हो जाता है, इनका पीरियड वन क्या है देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फर्स्ट टिल 31st of January, करेक्ट. तो इसी डेट से ही हमें पता चल जाता है क्योंकि ये पीरियड वन है एंड पीरियड वन इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of January, which means this calendar is following the US business process. Okay, अगर यूएस में जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ये लोग वो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं. So obviously our entity name represents the same also, USMF, United States, something like that. Okay, Contoso Entertainment System. So हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन अगर ख़त्म हो जाता है तो इन द वेरी नेक्स्ट डे भी नहीं होता है आपका. रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है, फॉर एग्जांपल February 1st. So February 1st starts from midnight 12 only. So until 11:59 p.m. of 31st January 2024, this period status will remain open. Now don't consider this entity only USMF. We are working with USMF and rest of the companies are different. Okay, so since this is a demo environment, we will be having all the entities that are being linked with this particular calendar, correct. So now let us focus on this USMF only. For this particular company, for period one, if the period one has ended and we want to perform month end closing, so first of all what we need to do, we need to freeze the period, correct. So to freeze the period, we need to mark it as on hold. Means the current status will be on open status. Just simply we need to mark the status or change the status to on hold. So as a result, what will happen, the user, whoever tries to make any transaction using this particular period means any of the date in this period, the it will restrict the user to make such transaction. Means an error, it will throw an error stating that some period has closed or you are not allowed to make any transaction in this period. Okay, so इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना पीरियड को क्लोज कर सकते हैं. क्लोज तो नहीं होता है, ऑन होल्ड रखते हैं. देयर इज अनदर option which is known as permanently closed. We cannot perform this, we cannot apply this option directly or indirectly at any point of time. क्यों? रीज़न बिंग, अगर मैं ये परमानेंटली क्लोज लगा देता हूँ ना, व्हाट विल हैपन, हम लोग दोबारा से इस पीरियड को कभी नहीं खोल पाएंगे. कौन से पीरियड को? पीरियड वन, क्योंकि पीरियड वन इज द करंट एक्टिव पीरियड दैट वी हैव सिलेक्टेड एंड दैट वी आर ऑपरेटिंग ऑन. क्लियर? तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ऑन होल्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल गलती से भी परमानेंटली क्लोज हम लोगों ने कर दिया ना, तो मान लो कोई ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रिटिकल इंटीग्रेट ट्रांजैक्शन बाकी रह गया था करने के लिए एंड हायर अथॉरिटी ने भी इसको अप्रूव कर दिया कि यू शुड गो एंड मार्क योर ट्रांजैक्शन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, से फॉर एग्जांपल पीरियड वन. देन व्हाट विल हैपन, यू कैन नॉट रोल बैक योर पीरियड स्टेटस टू ओपन. ठीक है, इट विल परमानेंटली क्लोज द पीरियड इन ऑल कॉस्ट, रिजल्टिंग इन यू मे लूज योर जॉब ऑल्सो. ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग सिर्फ ओपन और ऑन होल्ड ही यूज़ करते हैं. तो ऑन होल्ड अगर करेंगे विच मीन्स इट हैज़ बीन क्लोज्ड टेम्पोररीली, और अगर बाद में कभी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हमें ज़रूरत भी हो गया,
what we can do, we can change the status again to open. Now for example, let me mark it as a permanent close. अगर मैं इसको option choose भी करता हूँ, then see what will happen. It will ask you again one question like a permanently closed period cannot be reopened. ये हम लोग दोबारा से नहीं खोल सकते. एंड न्यू ट्रांजेक्शन्स कैनॉट बी पोस्टेड. न्यू ट्रांजेक्शन मतलब अगर हम लोगों को कुछ अगर एडिशनल ट्रांजेक्शन रह गया है पीरियड वन में, जनरली तो फ्रेश ट्रांजेक्शन कभी होगा नहीं, इट विल बी ए बैकडेटेड ट्रांजेक्शन, देन we won't be able to perform the transaction again in this particular period. Then the last question is, are you sure you want to permanently close period one? अभी आप इसमें अगर yes कर दोगे, then it will be gone in all case. Okay. Now since it's a demo environment, it will again it will refresh the database after 15 days and it will again reopen. But in real scenario, that mistake should not be done at any cost. This mistake should be avoided, or this option should be totally avoided. Okay. And after this period status, you can see there are certain options: ledger, sales tax. These are all modules. Actually, these are not modules. These are activities related to a particular module. For example, it's a ledger. Ledger means, let me change it. Okay. एक्टिविटी मतलब लेजर जो आपको दिख रहा है ना, तो जितना भी आपका लेजर रिलेटेड टास्क होगा इन द जनरल लेजर मॉड्यूल, सो देयर विल बी अ मॉड्यूल नोन एज जनरल लेजर. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था. This is the only module. Any activity related to this general ledger module, if you want to restrict to a few person, you can do that by assigning to a particular group. Means that particular group can only access that this ledger module. Say for example, LT01 user, that was a group I have created previously. If I use this option, what will happen? Apart from LT01 users, no other person or no other users can access this ledger. जनरली ये कब दिया जाता है? जब मान लो पीरियड क्लोज हो गया. ठीक है, अभी इसको मैं ऑन होल्ड कर दूंगा. ऑन होल्ड करने से क्या होगा? इफ आई डोंट असाइन एनी यूजर हियर, लेट मी कीप इट डिफॉल्ट. तो क्या होगा? ऑन होल्ड करने से नो यूजर कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर पीरियड. मतलब ये पीरियड का डेट यूज ही नहीं कर पाएगा. से फॉर एग्जांपल मुझे 16 जनवरी को कुछ एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन रह गया था. आई शुड मेक इट ऑन February 1st or February 2nd or whatsoever date in the future date. So you won't be allowed to access this particular period on that particular date, as we have kept the period status on hold. अभी अगर मान लो पीरियड वन में कुछ है, ट्रांजैक्शन रह गया, हायर ऑथोरिटी से हम लोगों ने अप्रूव ले लिया कि मुझे बैकडेटेड ट्रांजैक्शन करना है. हायर ऑथोरिटी हैज़ अप्रूव्ड द ऑपरेशन और द ट्रांजैक्शन प्रोसेस टू बी मेड ऑन द सिस्टम. तब हमें क्या करना है? हमें ऑन होल्ड से जब मैं ओपन करूँगा ना, इट विल बी ओपन टू ऑल द यूजर दैट आर बीइंग असाइंड टू द सिस्टम. तो मुझे सबके लिए नहीं करना है. दैट रिस्क आई शुड नॉट टेक. व्हाट आई विल डू कि कहाँ पे मुझे एक्टिविटी करना है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जो हायर अथॉरिटी से जो अप्रूवल आएगा ना, वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आई नीड टू परफॉर्म सम ट्रांजैक्शंस ऑन जनरल लेजर. से फॉर एग्जांपल, देयर हैड बीन सम काइंड ऑफ expenses made on office miscellaneous office expenses, and that entry should be made on our general ledger module. तो मैं आपको बताऊंगा कि मिसलेनियस जब ट्रांजैक्शन होता है या फिर इन हाउस ट्रांजैक्शन होता है या फिर कुछ भी खर्चा होता है, हाउ वी कैन डू दैट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वेंडर और कस्टमर ट्रांजैक्शन प्रोसेस. तो वो सारा चीज़ हम लोगों का जनरल लेजर पे ट्रांजैक्शन किया था, ऑल द मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस. Then what we will do, we will create one group, say for example account executive groups, where all the entry makers will be inside one group. I will go in this list, I will select the group which will be created in the system administration module only. तो वहाँ से मैं मान लो ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप को मैंने सिलेक्ट कर लिया. नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप will be only responsible or will be only eligible to access this general ledger module in this particular period. Likewise, ऐसे हर एक मॉड्यूल पे मैं restrictions लगा सकता हूँ through some group assignments. ओके, अगर मैं वैसा कर दूंगा,
then only that specific or particular group will be eligible to access that particular module in that particular period. Am I clear with that? Yes. Okay, thank you. So any more question? No. Then we can proceed with our new topic. Okay, then let's move. Today, we are going to start with another basic configuration, yet it is the most important one. So, the topic name is currencies. So, currencies, as we all know, बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आई बिलीव यू पीपल आर फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, सो यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ करेंसीज. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग क्यों करते हैं? अल्टीमेटली टू अर्न सम प्रॉफिट. नाउ प्रॉफिट इन द सेंस लाइक वी विल बी अर्निंग प्रॉफिट इन द नेम ऑफ मनी ओनली. ओके, सो मनी को जब हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? वी विल बी डीलिंग विद सम करेंसीज बेस्ड ऑन आवर कंट्री. एम आई राइट? तो जैसे मान लो कोई हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल बी टैगिंग टाइप ऑफ करेंसीज based on our location as well as based on our entity where it is situated. Correct? Yes. Yes or no? Yes. Okay. So to now in real life हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली करेंसीज हम लोग का यूज होता है, जैसे मैंने बताया. लेकिन अगर हम लोग सिस्टम में सेम एक्टिविटी करने को कोशिश करें, लाइक इन द सिस्टम ओनली व्हेन वी विल बी यूजिंग आवर ट्रांजैक्शन, how systems are going to know that okay, this is the currency that we are going to use, or we are going to implement, or we are going to operate with, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वी नीड टू कॉन्फ़िगर द करेंसीज इन द सिस्टम ओनली. तो करेंसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, इन डायनामिक्स we maintain two types of currency. One is accounting currency, another is reporting currency. Okay, so in dynamics we have a concepts of two types of currencies, that is accounting currency and reporting currency. Let me take an example. First of all, let me try to explain what is accounting currency. Let me take a scenario. For example, suppose there is an organization which is located in India only. Cool. For example, XYZ company. XYZ company is located in India only. Now, what we'll do, this XYZ will be responsible for which type of currency? It will deal with only INR, Indian rupee, correct? So now thing is, now XYZ is located in India and its other subsidiary companies also. Say for example, XYZ1, relatable subsidiaries. Let me, just for an example, XYZ2. So these are all located in India. Now they are on. They will be only dealing with INR. So in that case, INR will be the local currency or the accounting currency. So in that case, what will happen? This entity will be operating in INR only, correct? अभी क्या होता है? मान लो मेरा एक कंपनी है यूएस पे. So let me take an example. My company is located in US. Now this US company will be only responsible or will be entitled to use USD currency, right? Since this is the head office, and it has set up its own head office in US. Don't let me take. Now, what will happen?
अगर एक कंपनी यूएस पे है तो उसका करेंसी यूएसडी होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, वी नो ऑल नो दैट. नाउ दिस कंपनी हैज set up another office in India, US IN. Just one example. उसका एक सब्सिडरी ब्रांच खोला है इंडिया पे. Now what this Indian company will operate with? INR. ठीक है ना. यूएस का हेड ऑफिस, यूएस में जो हेड ऑफिस है उनको सिर्फ यूएसडी से मतलब है, क्योंकि उनको जब रिपोर्टिंग्स का बारे में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब निकालना होगा, देन दैट दिस पर्सन और दिस एंटिटी विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद यूएसडी करेंसी. बट उनका जो ब्रांच ऑफिस है इंडिया पे, वो तो आईएनआर पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बिकॉज वी डोंट यूज यूएसडी इन इंडिया. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बेसिक सेंस. तब हम लोगों को क्या होगा, इस इंडियन एंटाइटी को जब रिपोर्ट भेजना होगा, लाइक कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तब इसे अपना आईएनआर को कन्वर्ट करके भेजना होगा टू यूएस. कन्वर्ट टू विच करेंसी? यूएसडी. मतलब जब रिपोर्ट आएगा ना, रिपोर्ट में उनका आईएनआर के जगह यूएसडी होना होगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट शुड रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ US dollar only instead of INR. Then only this head office will be able to analyze or recalculate their profit and loss statement from both the country itself. First of all, let me know if you have any doubt in this up till now or any question. No doubt. No doubt. Okay, fine. Then what we need to do, we need to create another type of currency which is known as reporting currency. Now reporting currency will be again depend on the situation. Situation means which organization is located where. Say for example, if you are having a company head office in US and branch office in India, what we need to do for with respect to Indian branch office, its accounting currency will be. Can I have the answer from you guys? Just remember, accounting currency is the local currency in which this branch office will operate. What will be the accounting currency of this branch offices? INR. INR. Fantastic. And in the same way, when this Indian company will try to send a report to the head office US, their report needs to be converted into US dollar. So in that case, their reporting currency should be USD. Got it? Yes. Now there are certain cases like there are certain countries. Okay, let me brief you with one more additional concept about exchange rate. It's a very important concept. Now see, when we are dealing with a foreign trade, okay. So since this is a foreign trade, right? Head office in US, branch office in India. So we are dealing with some kind of international. We are doing some kind of international trading. So in that case, we need to maintain an exchange rate. Exchange rate means it's a very simple thing. For one USD, what is the rate of Indian rupees? So in today's date, let me consider one USD is equal to is 80 for simplicity. Let us consider it as an example. So you need to maintain this exchange rate always if you are dealing with a or if you are performing a foreign trade. Now we are having a very good trade with US. India is having a regular good trade with US. So thereby maintaining an exchange rate on a regular basis. Now you guys, do you have any idea who is providing this exchange rate in India? Who is the exchange rate provider in India?
I don't have any idea. It is the RBI only. RBI means Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is maintaining this exchange rate for any country where we are dealing directly in terms of trading or in terms of whatsoever. Now there are certain cases, or there is a very unfortunate events where you will come to know that there are certain countries who do not have direct trading relation amongst each other. Yeah, Saurabh, you are having any question? Please tell me. Yeah, Saurabh, you're having, I think you're having a question. Please tell. I think your microphone is not working. Can you type in a message? Okay, you can do that and let me continue. So, so this exchange rate is being provided by Reserve Bank of India for our India. Now there are certain countries, I don't specifically remember. Let me take Mauritius, okay, and Australia. I supposed to believe like these two countries do not have direct trade in between. Now, what these two country will do if they want to have a trade? Because since these two countries are not having a regular trade, or they are not having any kind of trading relation in between these two, then for that reason they are not having a exchange rate, because without exchange rate you cannot do a trading internationally. So in that case, what they are supposed to do, suppose if any of the country wishes to have a trade for the first time, then what can be the possible solution? Please share your idea or share your opinion or share. Okay, thank you for your question. Yeah, same. All the countries are responsible for providing exchange rate. Means like there should be some kind of trading partner with respect to each and every country. For example, in India, with India, we can have, or we can say there are multiple countries who are directly trading with us. So in that case, we are having exchange rate with respect to that particular country in terms of Indian rupees or with their particular currency. Say, for example, in our if we are doing any kind of trading with Great Britain, like, or UK, then we can have one GPP is equal, 1 GBP is equal to maybe 90 rupees or some 95 rupees, something like that, or 100 rupees maybe at this moment. So in that case, whichever country we deal with, we all have exchange rate amongst us. So in that way, all the countries who are having some kind of good trading relation with their respective countries, all will be having a exchange rate provider in their country. In similar way, where our RBI is responsible for generating or creating such exchange rates for our country. Hope am I clear with the answer? Okay, thank you. So let me go back to my topic. Now there is a scenario, the scenario which I have already explained, like, or I already shared. Like there is a two country, Mauritius and Australia. Now these two countries are very typical and very peculiar. They had not any kind of trade in between throughout the time. Now, so now suddenly,
some kind of trading relation has happened in between these two countries, and they have agreed to trade some kind of product or something like that, exchange or a trade, basically trading any kind of product. Now what this country is supposed to do, what can be the possible solution? इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? अभी तो इनके बीच में ट्रेडिंग हुआ नहीं है, तो इनका एक्सचेंज रेट भी नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई दूसरा कंट्री का एक्सचेंज रेट हो सकता है, मॉरिशस का दूसरे कंट्री के साथ हो सकता है, लेकिन ये दोनों के साथ कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हुआ, सो दे डोंट हैव एनी एक्सचेंज रेट इन बिटवीन दिस टू। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? I would like to know from you guys. Please respond. Any answers are welcome. One input, they will trade in dollar. Yeah, exactly. This is one point. To be very specific, they will check like which is the standard exchange rate they are having for their particular country. Say, for example, in India, we are having a standard USD in most cases. Like if we want to transfer any kind of, or if we want to convert any currency to our Indian currency, then we need to convert them first in US dollar, then it comes to India. So in that way, Mauritius, what will do? It will check with which country they are having a standard terms and condition to maintain the exchange rate. So in that case, as per my knowledge, it's like some kind of European countries, like say for example GBP or anything. Then Australia has to do the same thing to maintain this action. First of all, if Mauritius is sending or trading with Australia, the currency should be converted to GBP. Then this GBP, Australia indirectly will connect with GBP, and they will convert the GBP into their Australian dollar, AUD. It again depends. So, for example, let me take the Mauritius currency as MUR, just for an example, because I'm also not sure what kind of currency they are using. It's an example. Just I wanted to display. So it's a vice versa thing. You need to have a bridging currency exchange rate in between, so as to have a smooth trading process in between the two countries who are directly not involved for any trading purposes. They need to go through one of the standard exchange rate provider who will be maintaining both of their account simultaneously in some other way. Okay, am I clear with that? Yes, any third country currency can be used, provided that third country currency is related or is standardized with that particular currency. Am I clear? Okay. Okay, fine. Fine. Now let us go to system and let us see how we can do the same thing. Okay, let me go to currency. So how can I go to currency? Again, the navigation will be general ledger, currencies, currencies. Okay, remember the navigation path. So general ledger, currencies, currencies. Most of the cases is in particularly in this application, you will be having max to max 2 or 3 steps, 3 or 4 steps navigation path. Like general ledger one, currency, you need to click on it. That is the second step, and third step is the main option itself, currencies. So once you go inside currencies, to be on a very happy note, आपके पास ऑलमोस्ट ऑल करेंसीज का कन्फिग्रेशन दिया रहेगा, मतलब करेंसीज क्रिएट किया रहेगा. यू डोंट हैव टू डू एनी एडिशनल टैक्स इन दिस पर्टिकुलर करेंसी. So how you can create this particular currency? Let me go ahead now. See, if you check INR, you will get
This INR already created. So you cannot again create the same thing which is already in existence in this particular list. मतलब जो एक बार बनाया हुआ है उसको आप दोबारा से क्रिएट नहीं कर पाओगे. You need to create something different which is not created before. Say for example AUD. Let me check Australian dollar. Yeah, Australian dollar is also available. So on a very basic sense, USD will be also available. Yeah, USD is also available. So how you can create? You need to click on new. You need to give the currency code. Currency code means like INR, and you need to give the name as an Indian rupee. It will automatically populate, and you need to give a symbol. Okay, a symbol as in like anything, like R. There's a particular specific symbol, right? So you can do that. Now there is one option known as reference currency for triangulation. Now what does this triangulation mean? I have already explained in my previous example. See, in this scenario, what we did, this Mauritius currency has been converted to European GBP. Again, this GBP has been converted to Australian dollar to get the same amount, right? So, in between, who is the third party here? In this triangle, the triangle has been formed, right? GBP. In one corner, there is Mauritius. In another corner, it's an Australian dollar. So, never mind, but this both directly cannot interconnect each other. They need to go via this particular currency. So in that case, European currency will be treated as a reference currency for triangulation. Okay. So see, the definition itself says the currency that other currencies which are defined as denomination currencies are triangulated through. Triangulated means it's a kind of passage. Okay. लाइक आपका एक टनल है जिसके थ्रू से ही आपको जाना पड़ेगा. सो जीबीपी इज द टनल ओनली थ्रू विच दिस मॉरिशियस हैज टू पास ऑन and be converted into Australian dollar. Hope am I clear with that? Yes. Okay. Now see there is another currency converter. So online numeric conversion tool. It's a good thing for dynamics. Like for every option, if you hover your mouse in a specific option, you will get the definition. So if you want to calculate some kind of your means like if you want to make some kind of calculation with a currency, then you can just enable this option. Okay, and in regards to that, you will be having two options: suffix, prefix, and suffix. Prefix means, say for example, uh, since this is an Indian rupees currency, okay. So how we supposed to write in our generic accounting term? Rupees 100 and then forward slash and hyphen, right? So this will be treated as a prefix, say for example rupees, and suffix will be treated with this character. So every time, whatever amount you will be inputting in your system or transacting through, in your report this kind of symbol you will be getting, like this prefix and suffix. It will be appended with the amount and it will come up as a rupees 100 or some whatever amount it is, and then followed by forward slash and hyphen. Now next configuration comes in rounding rules. So rounding means it's a basic calculation. Again, we all know like how we can round up our uh, currency to the next digit, or to the next unit as per our given numbers. Say for example, general rounding rule is 00. It will not round means like suppose if I provide here 50, so it will take the value. ओके वन ऑप्शन एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, द सेटिंग फॉर राउंडिंग करेंसी अमाउंट हैज बीन चेंज, मतलब एक अपडेट मैसेज दे देगा, दिस माइट अफेक्ट करेंसी अमाउंट ऑन अनपोस्टेड ट्रांजेक्शन. मतलब जो अभी ट्रांजेक्शन अगर हम लोग कुछ पोस्ट करके रखे हैं और या फिर अभी तक पोस्ट नहीं किया वो हम लोग आगे देखेंगे, वहाँ पे ये इफेक्ट डालेगा. तो लेट मी कीप इट सिंपल, लेट मी नॉट चेंज इट नाउ. सेल्स ऑर्डर में मतलब जब हम लोग सेल्स ऑर्डर यूज़ करेंगे या फिर सेल्स ऑर्डर लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग कितना राउंड कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिस अमाउंट,
23.40. लेट मी टेक दिस एग्जांपल। अभी अगर ये अमाउंट सेल्स में आया है, मतलब वी नीड टू प्रोवाइड दिस अमाउंट इन द सेल्स ऑर्डर, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग मेथड लगा सकते हैं, राउंडिंग मेथड। नॉर्मल नॉर्मल मेथड में क्या होगा, 23.40 को ये ले लेगा 23 रुपीज़। ओके, मतलब स्टैंडर्ड जो हम लोग राउंडिंग कैलकुलेशन करते हैं, लेस देन 0.50 मीन्स यू नीड टू रोल बैक टू योर बेस करेंसी, दैट इज 23 only। अब ये नॉर्मल से अगर मैं डाउनवर्ड दूंगा, डाउनवर्ड में भी सेम होगा, टुवर्ड्स डाउन मतलब नीचे की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लोअर। एंड इफ यू आर राउंडिंग अप मीन्स it will check what is the figure, whether it's 40 or 50. If it is 50, then the value will be 24. Now if it is 40, it will still act as a 23. So more or less these two methods are same. Normal, it will keep normal, downward it will go in a downward section अगर 40 है। अगर मान लो यहाँ पे 50 होता है, what will be the case? If you are keeping it as a normal, then it will convert it to 24 in normal case, और अगर 23.50 दे के राउंडिंग मेथड अगर मैं इसको डाउनवर्ड कर देता हूँ, देन इट विल चेक व्हाट इज द वैल्यू 50, देन ऑल्सो it will calculate whether it should go downward or upward. If it is going downward, then ये 50 को ही कंसिडर करके इसको डाउनवर्ड पे ले जाएगा, मतलब वन स्टेप डाउन ले जाएगा। मतलब वी शुड नॉट कंसिडर दिस 0.50 एज एनी अमाउंट, इट शुड राउंड अप टू 23 ओनली, मतलब इसको एक्सक्लूड कर देगा सिस्टम से, सिंस we are forcing it in a downward direction, rounding method to be downward. And if you are rounding up, then undoubtedly it will go up to 24. Any doubt? No. Okay. Similarly in purchase order also, अभी ये प्राइसेस जो है, ये प्राइसेस को हम लोग कभी छेड़ते नहीं है, रियल लाइफ में भी मैंने देखा नहीं है किसी को यूज़ करते हुए। व्हाट वी जनरली डू, वी डू इन अ सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर इफ़ क्लाइंट डिमांड्स। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, देन सिंपली वी विल लीव दिस कन्फिग्रेशन, वी वोंट डू दैट। ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑनलाइन न्यूमेरिक कन्वर्जन तक के हम लोग करेंगे, अदरवाइज अप टिल दिस इट्स सफिशिएंट एनफ फॉर ए जनरल कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ करेंसीज। ठीक है। अब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट का करेंसी ट्रायंगुलेशन भी है, मे बी दे आर डीलिंग विथ 2 और 3 कंट्रीज, तब हम लोगों को क्या करना है, एनेबल करना होगा इसको। एनेबल करने से क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे करेंसी कोड दोगे या फिर जो भी करेंसी को डिफाइन करोगे, दैट करेंसी विल बी एक्टिंग एज ए करेंसी फॉर ट्रायंगुलेशन। मतलब जैसे हम लोग का एग्जांपल के केस में क्या हुआ था, जीबीपी वाज द रेफरेंस करेंसी फॉर ट्रायंगुलेशन, यहाँ पे वही करेंसी को आप एक्टिवेट करोगे एंड इट विल एक्ट एज ए रेफरेंस करेंसी फॉर ट्रायंगुलेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर करेंसी ही आपका ट्रायंगुलेशन पे बैठे, ओनली स्पेसिफिक currency will be treated as a reference currency for triangulation, and it will again depend, and that again depends on the business transaction, how this client is performing. अभी आपका क्लाइंट मॉरिशस है, सपोज यही सिनेरियो का आपका क्लाइंट बन गया, अभी मॉरिशस है, तो मॉरिशस का आपने यहाँ पे करेंसी बना दिया एमयूआर बोल के। नाउ दिस क्लाइंट वांट्स टू डील विथ ऑस्ट्रेलिया, तो उसका उसके लिए भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपने बना दिया एयूडी। अभी इन दोनों के बीच में हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, वो हम लोग कनेक्टिविटी कहाँ करेंगे, एक्सचेंज रेट पे, एंड दैट टॉपिक इज कमिंग अप नेक्स्ट। तो उस जगह पे आपको एक यूरोपियन के साथ पहले मॉरिशियस करेंसी को कनेक्ट करना होगा। अगेन यू नीड टू कनेक्ट जीबीपी विथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तब जाके इन लोगों का जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, it will directly interconnect with each other, and with the help of that exchange rate in between these two sections, they will perform the transactions. Any confusion up till now?
No confusion? I have. Yeah, please tell me. बोलिए. Wait, wait. ठीक है, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं अगर आपका नॉइज इशू हो रहा है तो. India and Australia, we need to check if there is any exchange rate in between. If it is there, we can directly connect India and Australia. There won't be any in between transactions, like in between uh, currency would be required. And if it is not, if we are not having any direct relation with Australia, we need to go ahead from the US. You can check your Google if there is a direct connection in between or not. If we can perform anything. और एक उपाय भी कर सकते हैं. You can check what is currency rate for $1 Australian with respect to Indian rupees. So you can directly check in Google. Let me go ahead. Is there any direct trading relation between Australia and India? See, India is Australia's seventh largest trading partner and our fifth largest export market. So definitely they are going to have a exchange rate in between India and Australia. So if we want to take opportunity to search exchange rate list today, you can have this table here, currency exchange table. See, आपको यहाँ पे दिखाई देगा किस किस के साथ डायरेक्टली हम लोगों का रिलेशन है और किस किस के साथ एक्सचेंज रेट. अगर ये एक्सचेंज रेट हम लोगों को दिखाई दे रहा है excuse me, then we can directly confirm that yeah, we can directly trade with that particular country. Indian rupee to US dollar, euro, British pound, Australian dollar, Canadian dollar, Singapore dollar, Swiss francs, Malaysian ringgit, Japanese yen, Chinese yuan. Okay, so this is the list, or you can have a regular lookout. Let me take the link and let me paste it in the chat box. You can keep it for your reference and you can have a daily lookout like how these exchange rates are getting converted. Okay, so these are the things you need to have some kind of information and use the logic if you want to be a good consultant actually. So this is what makes you different from other regular consultants. So small thing, if you are having a small notice around all the things, then you can become a unique and some kind of different consultant with respect to other regular consultant. So this is the thing that matters actually. So you should have out of the box thinking, and with respect to that, you can you can apply logic. Okay, let me go ahead and see. There is another option for currency gender. So this is a very interesting thing. I have never seen. Oh, sorry, this already exists. So I cannot go ahead with this thing. So let me take some existing currency table. Since that INR was already created, so I was trying to create another INR currency. So it was restricting me to do that same thing. अभी देखो और एक ऑप्शन है करेंसी जेंडर. आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस दिस ऑप्शन इज देयर. मे बी there is something you need to make identifiable object to this currency.
So defining the gender. Okay, so it's a very interesting thing, and why this gender is defined, it's not very clear yet till now. You need to just know for which country what kind of gender we should apply for our currency. So for India, it is masculine, and it's very few countries. Say for example, maybe France, France. What is the currency for France? Can anybody suggest me? Do you have any idea? Let me go to currency again. Let me check for France. As far as I remember, for France, the gender is feminine. No. So, except for few countries, I will let you know which country. All other countries' currencies are represented with a masculine gender. Okay. So, this is the option, alternate option that has been given in this dynamics. So, that should be given. Other than that, it has no other specific uses. So you need to just define the currency gender. See, all other currency has a masculine. Maybe France or Italy, they are having feminine. I will let you know which country has a currency gender. And there is another option known as electronic invoices. There is nothing much to do. Exchange rate variation limit. Suppose there is a variations in exchange rate, then you can provide that number. Like in what unit this exchange rate gets varies, a number of decimal inside catalog. So these are some kind of non-usable configuration hardly people are using, as I told you. So in that case, maximum configuration, mandatory configuration will be in the first row only. Other than that, very few and rare cases, second and third will be used up. Okay, and with that, your currency configuration will be accomplished. अभी करेंसी कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे एक्सचेंज रेट को बनाना पड़ेगा. ओके, वी नीड टू डिफाइन द एक्सचेंज रेट फॉर आवर कंट्री, स्पेसिफिकली इफ वी आर डीलिंग विद अ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन ट्रेडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हमें करेंसी रेट एक्सचेंज रेट मेंटेन करना ही पड़ेगा एज यूजल. सो एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए अगेन सेम नेविगेशन, यू नीड टू गो टू जनरल लेजर. लेट मी collapse all. General ledger, currency, and you will be finding these two options: currency exchange rate and exchange rate types. So before defining the exchange rate, you need to create one exchange rate type. So let me click on this particular option. So see, there are different types of exchange rates: average exchange rate, and you will be getting all the definition in the name only. Exchange rate. Budget exchange rate means it's a futuristic exchange rate. Means like when you will be preparing your budget, and if you are dealing with some other countries, then you can make a prediction, or you can make some assumptive figure, like this might be the unit exchange rate for this particular currency. Okay, now there might be some other different currency like closing, constant, default, export in, import in, market. So based on that, you can create your exchange rate type. So how to create an exchange rate? Let me click on new में जब हम click करेंगे, तो you need to define your exchange rate. Say let's for example, what is our entity name? LT exchange rate. Fine. LT01 exchange rate. So after defining the exchange rate, we need to mark the exchange rate, and we need to click on exchange rate. Done. Now in this exchange rate, you need to create your actual exchange rate.
So how to do that? Again, click on new. After click on new, your form will be enabled. अभी ये जो आपका फॉर्म है वो आपका enable हो जाएगा. From which currency to which currency you want to convert your, or you want to define your exchange rate. Say for example, let me create from USD to INR. Okay, and conversion factor is 1, means per unit your exchange rate will be defined, means for 1 USD what will be the amount in terms of INR. So after defining this particular currency, from this currency to that currency, you need to add your exchange rates in this section. Click on add. You need to give display valid exchange rates for the date range. You need to particularly define the date range. Say for example, I need to define the exchange rate for a particular month. Now for this particular month, I need to click on 1st of April to 30th of April. Okay, after defining this date, you need to click on add, and according to our system, exchange rate may change on a daily basis. Am I correct? एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे तो चेंज होगा ना. कभी 70.50 हो सकता है, तो कभी 70.55 भी हो सकता है. टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी स्पेसिफिक. एम आई करेक्ट? ओके, कूल. तो मान लो मेरा 1 अप्रैल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ exchange rate, suppose 80.26. Okay, that will be for 1 INR, sorry, for 1 USD it will be 80.26. Again you need to add another, अगर आप सेकेंड डे में ऐड करना चाहते हो तो. अगर ये मैनुअल प्रोसेस पे आप अगर कैरी आउट कर रहे हो, मतलब क्या होता है, देर आर टू मेथड्स और टू प्रोसेस फॉर डिफाइनिंग एक्सचेंज रेट. एक तो होता है मैनुअल प्रोसेस और दूसरा होता है ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक में क्या होता है, ये टेक्निकल टीम टेक केयर करता है, बैंक के साथ, आरबीआई के साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेता है, एंड थ्रो बैंक एक एक्सचेंज रेट का जो उनका सिस्टम है वहाँ से एक पास की दे देगा. पास की मतलब उसको क्या बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे बोला जाता है एपीआई. एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. वो क्या होता है, दिस इज ए की टू योर लॉक. मतलब वो अगर आपको चाबी मिल गया ना, देन फ्रॉम दिस डायनामिक्स ओनली यू कैन डायरेक्टली फेच और ऑटोमेट द प्रोसेस विद द बैंक सर्वर. मतलब आरबीआई के साथ एक बहुत हाई सिक्योर्ड कनेक्शन बनेगा, जहाँ से डायनामिक्स पे डे वाइज बेसिस पे ये एक्सचेंज रेट डिफाइन होते रहेगा. यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, मैनुअली आपको करना ही नहीं है, एंड जनरली वही होता है मैक्सिमम केसेस पे. तो नहीं तो आपको हर दिन आपको बैठना पड़ेगा एक्सचेंज रेट खोल के, सुबह को आप डिफाइन करो, जो प्रीवियस डे एक्सचेंज रेट था वो नेक्स्ट डे आप यूज़ करो. जनरली वैसे ही होता है कि आज के डेट में जो एक्सचेंज रेट डिफाइन होगा दैट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट डे ओनली, एंड द थिंग विल गो ऑन. सो ऐसे आप कितना डिफाइन करोगे, यू नीड टू प्रोवाइड द रेंज एवरी टाइम एंड डिफाइन द डे वाइज एक्सचेंज रेट. अगेन मुझे मई में अप्रैल में जाना होगा, आई विल गो टू अप्रैल, आई विल सिलेक्ट द सेकेंड डे, एंड आज के डेट में मान लो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 80.29. अगेन यू टू ऐड, अगेन आप 3 तारीख के लिए दो अप्रैल का. गॉट इट? आज के डेट में मान लो कुछ जादू ही हो गया, 79.89 कम हो गया, विच इज़ वेरी रेयर केस. तो ऐसे करके आप एक्सचेंज रेट को डिफाइन कर सकते हो. तो वंस योर एक्सचेंज रेट इज डिफाइन, you can start transacting in between these two currency. Now there is one point I would like to add. एक बार मान लो आपने यूएसडी से आईएनआर को सेटिंग कर दिया ना, मतलब कन्फिगर कर दिया, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर अनदर कन्फिगरेशन फॉर आईएनआर टू यूएसडी. ओके, एक बार आपने अगर यूएसडी से आईएनआर कर दिया ना, इट विल वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो. आईएनआर टू यूएसडी भी ये काम करने वाला है, एज वेल एज यूएसडी टू आईएनआर. नाउ द थिंग इज, जैसे मैंने मॉरिशस का एक एग्जांपल दिया था, व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू क्रिएट अनदर एक्सचेंज रेट which is, say for example,
Mauritius rupee to GBP, या पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटिश पाउंड। उनको यहाँ पे एक डिफाइन करना होगा, मैं एक ही ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 अप्रैल टू 30 जून फॉर फर्स्ट क्वार्टर, दे हैव टेकन फॉर फर्स्ट क्वार्टर। अब जो मैंने यहाँ पे यूएसडी से आईएनआर पे क्या किया था, आई हैव टेकन अ रेंज ऑफ मंथ। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मंथ का ही एक्सचेंज रेट बनेगा। You can take it on a quarter note, you can take it on a half year note, or you can take for a full year also. It again depends from client to client how they are processing their business. Understood? Yes. नाउ अगर अभी हमें हमें करेंसी ट्रायंगुलेशन के बारे में बात करना है, तो जैसे हमने एग्जांपल पे देखा था वो कैसे काम करेगा। मॉरिशस से जीबीपी आ गया, से फॉर एग्जांपल 89 रुपीज़, जस्ट अ मेयर गेस और मेयर एग्जांपल। अभी यहाँ पे मुझे अगेन और एक एक्सचेंज रेट क्रिएट करना पड़ेगा, जीबीपी टू एयूडी। जब मैं कर दूंगा मुझे ऐड करना होगा यहाँ पे स्टार्ट डेट मैं एक ले लेता हूँ, 1 एक्सचेंज होगा 76, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। व्हेन आई विल डू दिस, तब क्या होगा, ये मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रांजैक्शन आराम से कर पाएंगे थ्रू दिस लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इस लीगल एंटिटी के अंदर ही एक एक्सचेंज रेट क्रिएट किया हूँ, एलटी एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर ये सारा कॉन्फ़िगरेशन बैठा हुआ है। Then I can use this exchange rate as a whole to perform our activity and have this calculation inside to perform our transaction in a smoother way. Clear है इतना तक? समझ गया। Fine. Now see, इसमें और मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ। Let me go inside, deep inside. अभी 1 2 3 यहाँ पे मैंने यूएसडी आईएनआर पे 3 दिन डिफाइन किया, ठीक है। नाउ लेट मी डिलीट दिस सेकंड। मैं इसको अगर रिमूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आई एम टू सिलेक्ट द रो एंड क्लिक ऑन रिमूव। कर देने से क्या होगा, देयर विल बी वन क्वेश्चन आस्क्ड, यू आर अबाउट टू डिलीट अ रिकॉर्ड इन एक्सचेंज रेट, डिलीट रिकॉर्ड, ऑब्वियसली यस, एंड देयर इज नो हार्म इन इट। अभी मान लो 1 अप्रैल को मेरा एक्सचेंज रेट था 80.26। What according to you will be the exchange rate on 2nd of April if there is no defined specific defined exchange rate in between 1st and 3rd of April? प्रीवियस वाला हाँ, था देखिए। प्रीवियस वाला ही यूज होगा, यस करेक्ट। जब तक एक्सचेंज रेट न्यूली डिफाइंड नहीं होता है, until then whatever with the last exchange rate got updated, that exchange rate will be considered for any transaction. Am I clear with that? हाँ। Okay. So once you are done configuring all the thing, similar case, we will click on save, and our exchange rate configuration will also be completed. Currency हो गया, exchange rate हो गया। अब तक हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया, कैन वी रिकॉल? We have created a legal entity, right? हाँ। Just a second. What we did previously, we have created legal entity. सेकंड हमने कैलेंडर कॉन्फ़िगरेशन किया, फिस्कल एंड लेजर। थर्ड हमने क्या किया आज, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। और कुछ किया हमने? नो। और भी है, वी नीड टू कॉन्फ़िगर chart of accounts, inside which main accounts, account structure.
Okay, let us move to chart of accounts. I believe with this ये तीनों configuration आप लोगों का clear होगा. Any question specific to currency? अभी जो हमने थोड़ा सा सेशन देखा, जो भी देखा in terms of currency, any question? अभी तक तो ओके लगा, बस जब हम लोग तो तब Yeah. Okay, आपने एक क्वेश्चन पूछा था करेंसी जेंडर इज मैंडेटरी. Just you need to define it. Otherwise, there is no specific use of this currency gender. ओके, हार्ड एंड कोर कहीं पे भी इसका एप्लीकेशन नहीं है कि आपको ट्रांजैक्शन के टाइम में कुछ ना कहीं यूज होने वाला है. बट जस्ट टू डिफाइन द थिंग, जस्ट टू डिफाइन द आइडेंटिफाइबल एज एन आइडेंटिटी, यू नीड टू जस्ट मेक यूज ऑफ इट. लाइक आपको बस एक डिफाइन करके रख देना है. दैट्स द थिंग. अदरवाइज देयर इज नो सच एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. Once you are done with this basic 5 configuration, what you need to do, you need to link it up in a special form. Okay, now what is this special form? That is known as ledger form. And ये ledger form हमें कहाँ मिलेगा? General ledger पे. So let us check, or let us understand why this general module is so important to us. Okay, ये इतना important क्यों है जनरल लेजर मॉड्यूल? लेट मी फर्स्ट डिफाइन इट कि क्यों इसे ज़्यादा important है. Why this thing is important? So GL module is required to record the financial information of a company. Okay, क्या समझ में आ रहा है? GL मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. जितना भी एक कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा, लेट इट बी अ ट्रांजेक्शन, लेट इट बी अ सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड, तो वो सारा चीज़ हमें मेंटेन करने के लिए या फिर उसे प्रिजर्व करने के लिए वी नीड दिस पर्टिकुलर जनरल लेजर मॉड्यूल. सो देर आर डिफरेंट फंक्शनलिटीज और देर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर जनरल लेजर. लेट अस सी. बहुत कुछ है. जर्नल एंट्रीज है, यहाँ पे हम लोग अपना जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं. अर्लियर इन दिस सेशन ऑनली, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मैं बात कर रहा था वाइल एक्सप्लेनिंग द लेजर कैलेंडर, कि मान लो ये ऑफिस का मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो मिस आउट हो गया एंट्री लगाना, then what we can do, we can use this journal entries, because that particular expense is related to our office only. That is an in-house expenses, not related to some vendor or some customer. मतलब ये दो तरह का एक्सपेंसेस होता है ना, एक इन हाउस एक्सपेंसेस, एक आउट एक्सपेंसेस. आउट एक्सपेंसेस मतलब जो हम लोग का एक्चुअल ट्रेडिंग होता है, मतलब वेयर वी कैन काउंट आवर प्रॉफिट एंड लॉस, या और वी कैन काउंट आवर इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, वट एवर इट इज. यहाँ पे जब हम लोग का मिसलिनियस कुछ एंट्री होगा, वी विल यूज दिस जर्नल एंट्री सेक्शन यहाँ पे एंट्री करने के लिए. सो दिस जर्नल एंट्रीज विल बी अवेलेबल इनसाइड जनरल लेजर. There are some other things also, inquiries and reports, that will again depend, that will again related to this general ledger module only. मतलब इस ट्रायल बैलेंस में आपको बहुत सारा कुछ रिपोर्ट निकालने को मिलेगा. तो ऑल द रिपोर्टिंग थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट अंडर जनरल लेजर. फिर आता है periodic task. We will see slowly how all these periodic tasks we can use it. फिर allocations is also an important part. So ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो general ledger पे use होता है. And the most important part, obviously we have seen currency is a very important thing, calendar is an important thing. वी आर कमिंग अप विथ अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो हमने अभी देखा. ये चार्ट ऑफ अकाउंट में हम लोग मूव करेंगे, लेकिन जनरल लेजर का और भी दो तीन एक्सपेक्टेबल पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को साथ शेयर करना है. So I was speaking like you need to store or record the financial information of a company. ठीक है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेगा? ऑब्वियसली जब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, देन वी विल बी हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और डिफरेंट
पॉइंट ऑफ एलिमेंट, जैसे क्या क्या हो गया, कैलेंडर हो गया, हम लोगों का लेजर अकाउंट जो हम लोग क्रिएट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू से, दैट अगेन केम इनटू अ रोल। फिर आपका कैलेंडर हो गया, फिर करेंसीज हो गया। सो ऑल दिस थिंग नीड्स टू बी मैप्ड इन दिस जनरल लेजर मॉडल। तो हम लोग उसको मैप कहाँ करेंगे? we need to go to ledger setup, and then we need to go to ledger form। तो मुझे दोबारा से मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि लेजर फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा। we need to go to general ledger, ledger setup, and this ledger form। तो लेजर फॉर्म क्या करता है? इट कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स इनटू वन सिंगल प्लेस। then only we can say that our entity or our organization is ready to make or perform any transaction। जब तक हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं करेंगे, our legal entity is not at all ready to perform any business। so how we can link that? हमें यहाँ पे आना होगा लेजर फॉर्म पे। लेजर फॉर्म पे जब हम लोग आ गए, देन हम लोग को दिखाई देगा ऑलरेडी एक हम लोग का जो एंटाइटी है वो दैट इज लिंक्ड विद दिस लेजर फॉर्म। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन एडिट। हम लोगों का क्या क्या एंट्री हो गया? फिजिकल कैलेंडर हम लोगों ने क्रिएट किया था। नाउ वी विल लिंक दिस फिजिकल कैलेंडर टू दिस पर्टिकुलर लेजर फॉर्म। जब हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर कैलेंडर अगेंस्ट दिस एंटाइटी। मतलब अभी हम लोग जब ट्रांजेक्शन करेंगे, वहाँ पे जब हम लोग का डेट सिलेक्शन होगा, लाइक ऑन विच पर्टिकुलर डेट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन हैज बीन परफॉर्म, लाइक वेदर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और डेबिट ट्रांजेक्शन, वो जो पर्टिकुलर डेट होगा, दैट डेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस कैलेंडर ओनली। So if we remember what was our calendar name, LNT Cal, right? लार्सन एंड टर्बो का फिजिकल कैलेंडर हम लोगों ने क्रिएट किया था। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, खोलेंगे, एंड वी विल सिलेक्ट आवर रिस्पेक्टिव कैलेंडर। इसके बाद आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। सो व्हाट आर द मैंडेटरी थिंग्स दैट यू नीड टू अपेंड इन दिस और लिंक इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म? डिस्क्रिप्शन या फिर कंपनी नेम तो पहले से ही रहेगा, दैट इज द लीगल एंटिटी नेम। फिजिकल कैलेंडर, चार्ट ऑफ अकाउंट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, आई विल क्रिएट इट नाउ। और अकाउंटिंग करेंसी। अभी ये जो है बैलेंसिंग फिनेंशियल डायमेंशन, दिस इज समथिंग डिफरेंट। मतलब देर आर टू प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग योर रिकॉर्ड इन डायनामिक्स। क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, लाइक दिस इज वन प्रोसेस जहाँ पे हम लोग एक लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं और उसके बाद एज यूजुअल सारे एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। वी विल कनेक्ट ऑल दोस एलिमेंट्स इनटू द सिंगल लेजर फॉर्म, एंड वी विल स्टार्ट अहेड विद आवर ट्रांजैक्शन। अगर वहाँ पे भी कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, वी विल परफॉर्म दैट, एंड दैट्स अ रेगुलर थिंग। बैलेंसिंग फिनेंशियल डायमेंशन में क्या होता है? वी विल क्रिएट वन डायमेंशन एज एन एंटिटी। और ये कब होता है? जब हम लोग के पास मान लो मल्टीपल लीगल एंटिटीज एसोसिएटेड हो फॉर अ वन पर्टिकुलर पेरेंट लीगल एंटिटी। से फॉर एग्जांपल मैं टाटा का ही ले लेता हूँ। टाटा का एक हेड ग्रुप होगा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके अंदर टीसीएस आ रहा है, टीएमएफ आ रहा है, टाटा मोटर्स आ रहा है, और भी जितना भी टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है। सो ऑल दिस आर सब्सिडरी यूनिट ऑफ टाटा। तब वो लोग क्या करेंगे? ये जो सब्सिडरी यूनिट है, जैसे टीसीएस हो गया, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल हो गया, अगेन टाटा मोटर हो गया, ये तीनों को क्या करेंगे? एक डायमेंशन क्रिएट कर देंगे, एंड वी विल लिंक अप ऑल द डायमेंशन इन दिस लिस्ट। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इन दैट वे, पर्टिकुलर वे, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे। तब क्या होगा? हमें डायमेंशन को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। मतलब एक दो सब्सिडरी यूनिट के बीच में जब कुछ बिजनेस होगा या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगा, तब उनका जो अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी बैलेंस्ड ऑल टुगेदर इन दिस बैलेंसिंग फिनेंशियल डायमेंशन। But we are not going to perform such activities here, we will go in a generic method। ठीक है? सो वी विल लीव दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स ओन प्लेस। ये हम कुछ नहीं करने वाले इसको। तो हम कंपनी हो गया, कैलेंडर हो गया, अकाउंटिंग करेंसी। नाउ वी वांट टू क्रिएट आवर अकाउंटिंग करेंसी। फॉर एग्जांपल ये एल एन टी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एल एन टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? INR लेंगे। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग करेंसी। अगर
हम लोगों का ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही सिचुएटेड है और कहीं नहीं है, देन आइदर यू कैन गिव रिपोर्टिंग करेंसी और यू कैन लिव इट ब्लैंक। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या रिपोर्टिंग करेंसी है अगर कंपनी एक ही जगह पे बैठा हुआ है तो। सो इफ़ यू वांट टू गिव यू कैन गिव इट एज एन आईएनआर, क्योंकि ये आईएनआर पे ही ट्रांजैक्ट होगा और आईएनआर पे ही इसका रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, नॉट नॉट मोर नॉट लेस। नाउ अगर इसका एंटाइटी यूएस में हेड ऑफिस है, then what you need to do, your reporting currency should be USD. Guys, just give me a minute, I am having a one important call. आप कर लो। Guys, for your patience. So अभी मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम लोगों का एंटाइटी सिर्फ एक ही कंट्री पे लोकेटेड है, देन वी कैन यूज इट एज एन आईएनआर एज एन अकाउंटिंग करेंसी दैट नीड्स टू बी डन। और उसका रिपोर्टिंग करेंसी अगर हमें देना है तो वी कैन ये दे सकते हैं आईएनआर, और नहीं तो भी हम लोग वी कैन लिव इट ब्लैंक। बट इफ द थिंग गोज ऑपोजिट, लाइक अगर your organization is one of the entity whose head office is located in US, then what we need to do, we need to provide the reporting currency as USD। क्यों? As I told you earlier कि इसका जब रिपोर्ट बनेगा फ्रॉम when we will be providing the report to our head office, then that report must be translated into US dollar, then only their compilation will be successful. Other than that, other than that, that compilation won't be effective or it won't be justified. They won't be able to perform any kind of profit and loss analysis. Am I clear? यस, और फिर क्या देखते Okay, just a second. If our business is in India, it will be INR to INR. If with US and INR to USD. Okay. When making entry in ledger, do we have to change every time like one entry is of INR and one entry of? No, you don't have to. Like if you are performing any transaction, we will see in our general entry posting, like अगर आपको एंट्री लगाना है, सपोज फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन और सम काइंड ऑफ सेलिंग टू यूएस कस्टमर, तो क्या होगा जब पेमेंट आएगा ना, तो पेमेंट शुड बी इन यूएसडी फॉर्म ओनली। ओके, या तो जो पेमेंट आप ला रहे हो कस्टमर से, वो कस्टमर आपको यूएसडी में ही पे करेगा, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू आईएनआर, क्योंकि हम लोगों ने एक्सचेंज रेट लगा के रखा है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर हम लोगों का वेंडर को यूएस है, देन वी विल बी पेइंग देम इन आईएनआर ओनली, दैट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू यूएस। सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द करेंसी। हमें वैसा नहीं सोचना है कि अगर वो यूएस है तो यूएस में देना है, बार बार यू करना है, नहीं। हम लोग का जो लोकल करेंसी होगा, द अकाउंटिंग करेंसी, वी विल यूज दैट अकाउंटिंग करेंसी ओनली एज ए ट्रांजेक्शनल करेंसी। बाद में हम लोगों ने इंडियन रुपी में ट्रांजेक्ट किया है, व्हेन वी विल बी सेंडिंग द रिपोर्ट टू आवर हेड ऑफिस दैट इज इन यूएस, देन
we will our reporting currency will play the role of translating that INR automatically into USD. So am I clear with that, or do you have any further query? Okay. Sorry, हाँ अभी अभी तो ओके है. it's okay, na? Now you will be more clear after you perform that transactional entry. So we will be seeing in our subsequent classes. No worry on that. अभी के लिए आप समझ लो कि जब हम लोग अकाउंटिंग करेंसी क्या है, द करेंसी दैट वी विल बी ट्रांजेक्टिंग अपॉन, द लोकल करेंसी इनफैक्ट, मतलब जहाँ पे आपका लीगल एंटिटी लोकेटेड है उस जगह का जो करेंसी होगा दैट विल एक्ट एज एन अकाउंटिंग करेंसी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if your entity's head office is located in some other country, then that country then that the currency that country is representing will be your reporting currency. Okay. ओके. Okay. So one good thing is, see, इन डायनेमिक्स इट इज़ प्रोवाइडेड. अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ओके, से फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉप डाउन द लिस्ट. आज अभी मैंने एल एन टी कैलेंडर तो दे दिया, सो दिस इज़ माई कैलेंडर. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी कैलेंडर इन दिस लिस्ट, व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस मॉड्यूल लिस्ट, देन जनरल लेजर, calendar, fiscal calendar, what you can do directly is you can right click in this drop down and click on view details. तब क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली कैलेंडर पे मूव करेगा. अभी ये नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज आवर फॉर्म इज इनकम्प्लीट, एंड दिस इज सच ए फॉर्म. आपको आइदर ये पूरा फिल करना होगा या तो पूरा ब्लैंक छोड़ना होगा. देन ओनली यू कैन नेविगेट फ्रॉम दिस पेज टू अदर पेज. ओके, सो लेट मी क्रिएट ए चार्ट ऑफ अकाउंट अगेन. अभी हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट पे मूव करते हैं, आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक. So before chart of accounts, let me clear the theoretical concept. What is chart of accounts? What do you think? स्ट्रक्चर. No, it's not a structure. It is required. Means the chart of account required to know or maintain the financial information. Okay, financial information of the legal entity. Basically, it is to track the financial record. It is required to know the financial information of the legal entity. Let me try to explain with one example. Suppose मेरे एंटिटी में दो पर्सन हैं, रॉबर्ट. दे आर हैविंग सेम नेम एंड सेम इनिशियल्स. ओके, रॉबर्ट विलियम्स. नो, दिस सेकंड पर्सन इज आल्सो नोन एज रॉबर्ट विलियम्स. इनका नाम भी सेम है, इनिशियल्स भी सेम है, लास्ट नेम भी सेम है, बट ये लोग दो अलग अलग एंटिटी है. दीज आर टू डिफरेंट पर्सनल्स. अगर मुझे मान लो इस रॉबर्ट विलियम को कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, देन इन माय सिस्टम हाउ विल आई नो that from which Robert I need to transfer the amount to which Robert? Correct? There will be a confusion. Suppose there is a book in my system. Suppose there is a, for example, आपके पास दो डायरी है. Let me take an example of diary. ठीक है? One is the debitor diary. One is the creditor diary. Now you don't know from which Robert to which Robert, whether you need to debit the amount or you need to credit the amount. What will you do? अभी आप हमें तो बताया गया है कि फ्रॉम रॉबर्ट विलियम्स टू रॉबर्ट विलियम्स आई नीड टू क्रेडिट द अमाउंट ऑफ सो एंड सो.
ठीक है, लेकिन यू डोंट नो कि किसको डेबिट करना है या फिर किससे क्रेडिट करना है, मतलब किससे पैसा लेके किसको देना है, दैट इज़ वेरी अनश्योर। जब हम लोग के पास नेम इनिशियल से सेम है, कंफ्यूजन होगा ना। हाँ देन इन आवर system, in our accounting system, what we can do, we can provide one unique number to each entity or to each ledger book। ठीक है, अभी रॉबर्ट विलियम्स को हटा देते हैं, दैट शुड बी टर्म्ड एज लेजर बुक। Okay, then in our accounting system, to identify each one of our ledger book, we need to provide one unique number। ठीक है, जब हम लोग इसको यूनिक नंबर दे देंगे 1001 or 1002, then we can say that okay, from account 101 we need to debit an amount of so and so to the account 1002। now it is okay for us, तब तो confusion नहीं रहेगा। नहीं। So in that case, what we will do in our accounting system or in Dynamics specifically, we will never use the name. We will use the unique ID number, okay, of the ledger book. So to create such ledger or to group that particular ledger accounts, we need to have a chart of accounts in all। मीन्स ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या करेगा, ये सारे लेजर का जो इंफॉर्मेशन होगा, वेदर ये यहाँ से आपका पैसा माइनस हो रहा है, यहाँ से आपका पैसा प्लस हो रहा है, वट एवर मे बी द केस, all this record will hold this chart of account। means it's a group of accounts of all means of all the accounts, group of all the accounts, that is why it is named as chart of accounts all। so first of all you need to define your entities chart of account। यहाँ तक समझ में आया? हाँ Then तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन वन चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो लेट मी डिफाइन, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, न्यू में क्लिक करूंगा। सो वंस आई क्लिक ऑन न्यू, दिस फॉर्म विल बी एनेबल्ड। अभी आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारा चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा होगा, इंडिया, जापानीज, मलेशिया, मेक्सिको। सो लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी टू शेयर विथ यू कि इन रियल टाइम आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को शेयर भी कर सकते हैं विथ अदर एंटिटी। वाई? क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपका कंपनी सेम है, सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, देन यू कैन शेयर द सेम चार्ट ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अदर एंटिटी ऑल्सो। मतलब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाओगे ना, जो जितना सारा मेन अकाउंट्स बनाओगे इनसाइड वन चार्ट ऑफ अकाउंट, दोज मेन अकाउंट्स कैन बी यूज्ड फॉर दैट अदर एंटिटी ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग का इंडियन सिस्टम में एक अकाउंट रहता है ना, लाइक दैट्स अ ट्रेजरी अकाउंट इन ऑफिस, और कैश अकाउंट जहाँ से हम लोग पैसा निकाल के ऑफिस का मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्चा कर सकते हैं, लाइक लेट अस ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर टुडेज इवनिंग एंड द एक्सपेंसेस विल बी बियर्ड बाय आवर ऑफिस। तो वो पैसा कहाँ से आता है? दैट पैसा आता है फ्रॉम आवर कैश अकाउंट और द ट्रेजरी अकाउंट और द पेटी कैश अकाउंट। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है बट काम सेम है। So in that case, that petty cash account can be used or the cash account can be used in our Indian entity also, as well as for our other European countries or US countries entity also। ठीक है, तो वैसा अगर कोई सिस्टम होता है, then we can share our chart of accounts to other legal entities also with our that is being linked with our parent company। Clear? हाँ ओके, या पेटी कैश। सो पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एनेबल करने के लिए हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट मी डिफाइन विथ वन सिंपल नेम, LNTCOA। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा LNT चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके,
अभी के लिए आप मेन अकाउंट मार्क्स को छोड़ दो. आई विल लेट यू नो कि क्या है. अभी नहीं. लेट मी क्रिएट वन न्यू मेन अकाउंट. तो अभी ये हो गया ग्रुप का नाम, एल एन टी चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सेव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू दिस. आई विल गो अगेन. अभी ये जो ग्रुप क्रिएट हो गया ना, ग्रुप में तो अभी मेंबर्स को ऐड करना होगा. हु विल बी द मेंबर? द मेंबर विल बी आवर मेन अकाउंट्स. ठीक है. मतलब मेन अकाउंट इज नथिंग बट इट्स ए लेजर अकाउंट ओनली. अभी लेजर अकाउंट क्या होता है? फॉर एवरी ट्रांजेक्शन we need to maintain one single book for each. Correct? Suppose for ऑफिस एक्सपेंस, इसका दिन का खर्चा कितना हुआ है? वी नीड टू मेंटेन ऑल दोज थिंग्स इन ऑफिस एक्सपेंसेस बुक. सेल, आज के दिन में सेल कितना हुआ, उसके लिए एक अलग सा बुक. परचेज, आज के डेट में कोई परचेज हुआ है कि नहीं, उसके लिए अलग सा बुक. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन से एम्प्लॉय के अगेंस्ट में हमने कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उठाया, उसके लिए एक अलग सा बुक. सो ये अलग अलग बुक हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है कि नहीं, to keep a हाँ करना पड़ता specific track record of our expenses or of our revenue. Suppose we need to have interest that needs to be paid off to the bank. सो इंटरेस्ट पेबल का भी एक मैं अलग सा बुक बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट रिलेटेड ही एंट्री रहेगा कि हमने बैंक वाले को कितना इंटरेस्ट दिया थ्रू आउट द ईयर. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ किस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में थ्रू आउट द ईयर. सिमिलरली परचेज, सेल, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हुआ. फिर रेंट, हाउ मच रेंट वी पे थ्रू आउट द ईयर. इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो ये सारा जो हम लोगों का एक्सपेंसेस होगा या फिर जो भी रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट करेंगे, so for all those purposes we need to maintain each of all the account separate account. So those accounts are nothing but the ledger account, and in terms of dynamics it is known as main account. Any confusion? है। Are we clear? Yeah, all is clear. Thank you. So let us create one by one what can be our main accounts, all the main accounts. Okay. But before that, you should know, like, there are major categories that has been made for the types of main account we will be using throughout. Fine. So there are 6 types of categories that we can categorize for all the accounts we will be creating. For example, first one is asset. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा हम लोगों का अकाउंट क्रिएट होगा जो एसेट पर्पस के लिए यूज होगा. नाउ व्हाट काइंड ऑफ एसेट इट कुड बी? इट कुड बी ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट. तो किसी को पता है फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट? So there are very basic difference between fixed asset and current asset. What is that? Fixed asset is something that is fixed for our company. For example, building, laptop, furnitures, anything else?
vehicles, these are all fixed asset. Okay, current asset क्या हो सकता है? Current asset is something which is not fixed, like a very गुड एग्जाम्पल इज कैश अकाउंट. कैश अकाउंट पे क्या होता है? कैश आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है. सो इट्स मूवेबल, बट सिंस इट इज अ कैश, सो इट्स एसेट फॉर अस, राइट? We can use this asset for our different purposes to get something out of it. Similarly, बैंक अकाउंट इज ऑल्सो करंट एसेट, क्योंकि वहां पे आपका लिक्विडिटी फ्लो रहता है. सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स. तो हम लोग इसको स्पेसिफिकली इतना डिफाइन नहीं करते कि दिस इज फिक्स्ड एसेट, दिस इज करंट एसेट. व्हाट वी विल डू व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग एनी account name, say for example IT, IT asset, it will be considered as one kind of main account. ठीक है, इसका मैंने नंबर डिफाइन कर दिया 1001. इट विल बी कंसिडर्ड एज एन IT एसेट. सिमिलरली मैं और एक एसेट मेन अकाउंट क्रिएट करूंगा, एंड वी ऑल नो दैट मेन अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमें एक यूनिक आइडेंटिटी से डिफाइन करना पड़ता है नंबर से, सो दैट आवर ट्रांजेक्शन कैन बी एट ईज. तो मान लो ये मैंने एक IT एसेट के नाम पे एक मेन अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया विच हैज़ बीन नेम्ड एज 1001. दूसरा मैं क्रिएट करता हूँ 1002, से फॉर एग्जांपल व्हीकल्स. ऐसे में दूसरा हो गया. तीसरा मैं क्रिएट करता हूँ 1003, इट विल बी नोन एज बिल्डिंग्स. तो ऐसे करके मैं मेन अकाउंट्स क्रिएट करूंगा, एंड दिस मेन अकाउंट्स विल बी कैटेगराइज्ड इनटू एन एसेट कैटेगरी. मतलब मुझे इसको एसेट कैटेगरी के अंदर में डालना पड़ेगा. सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू, से फॉर एग्जांपल अभी मैं और एक एसेट अगर क्रिएट करता हूँ, लेट मी क्रिएट 1004 एज कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट को मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करूंगा कि वेदर इट इज अ करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट. सिंपली इट्स अ एसेट अकाउंट. We all know that it is a current asset in between, but explicitly it should not be defined anywhere, or it should be defined nowhere that it is a current asset. इतना हम लोग bifurcation नहीं करने वाले. What we will do, we will simply use all the asset main account that needs to be utilized throughout our transaction. वैसे सोच सोच के हम लोग create करेंगे. लेकिन रियल टाइम में क्या होगा? रियल टाइम में you will get all the list of accounts that needs to be created. Say for example आपको दे दिया गया है बिल्डिंग्स, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, व्हीकल्स, फिर रेवेन्यू रिसीव्ड, फिर डिविडेंड रिसीवेबल. The only thing you need to do is you need to identify which account is falling under which category. तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि what are the 6 different types of categories that should be categorically applied to all the main accounts. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी डिलीट कर देता हूँ. लेट आई हैव क्रिएटेड वन एसेट कैटेगरी. नेक्स्ट कम्स योर लायबिलिटी. ठीक है, अब लायबिलिटी बोलने से क्या हो सकता है? से फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, fuel expenses, not expenses, it will come under expenses. So these are the liability मतलब the money that we need to pay to some vendors, that will be considered as liability. So ऐसे हम लोग liability का भी account बना सकते हैं. Third one is expenses, expense list में क्या आएगा? रेंट अकाउंट आएगा. ये लायबिलिटी रेंट अकाउंट में नहीं आएगा. सॉरी. Electricity bill can be of liability. All the bills and other related bills that needs to be paid, and you don't have to worry for, क्योंकि ये जो अकाउंट नेम है वो क्लाइंट की तरफ से ही आ जाएगा.
आपको अलग से कुछ सोचना नहीं है। आपको सिर्फ अगर सोचना है तो हाउ यू आर डिफाइनिंग द अकाउंट नंबर, मतलब मेन अकाउंट जो आप डिफाइन करोगे उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आप किस रेंज पे डिफाइन कर रहे हो और कितने नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हो, दैट यू नीड टू थिंक ऑफ, एंड अंडर विच कैटेगरी दिस अकाउंट इज फॉलोइंग, वो आपको सोचना है। ठीक है, एक्सपेंसेस में रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फोर्थ वन इज रेवेन्यू, कितना हमने सेल किया है, सेल अकाउंट, डिस्काउंट रिसिव्ड, अगर हम लोगों को कोई वेंडर डिस्काउंट देता है देन ऑल्सो वी कैन create one such account. So it entirely depends on the company what are the types of account they want to use, मतलब टाइप तो आपका चार ही यूज होने वाले हैं, बट व्हाट आर द अकाउंट नेम दे वांट टू गिव, ये पूरा पूरी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। तो लेट अस गो टू सिस्टम एंड चेक हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग। तो अभी मेन अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या होगा, आफ्टर क्रिएटिंग दिस चार्ट ऑफ अकाउंट एंड गिविंग ए डिस्क्रिप्शन, वी नीड टू क्लिक ऑन न्यू। जैसे ही मैं न्यू में क्लिक करूंगा, सी इट विल टेक मी टू ए न्यू फॉर्म। ठीक है, अभी इसमें मुझे नया अकाउंट एक एक करके क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट रेंज आई एम गोइंग टू यूज फॉर व्हाट कैटेगरी। अभी मान लो मेरा एसेट कैटेगरी है, ठीक है, एसेट कैटेगरी में कितना मेरा अकाउंट क्रिएट होने वाला है आई डोंट नो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द रेंज 1 till 9,999। कितना नंबर हो गया यहाँ पे, almost if I include 1 and 9,099, almost near to 10,000, right? So I have given one space like of 10,000 allocation, मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं 10,000 different account only for asset I can create in the system. Understood? 10,000 कैसे हो गया, जैसे आईटी एसेट हो गया, व्हीकल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कैश अकाउंट हो गया, ऐसे और 3 जितना भी हमें कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, दैट वी हैव द प्रोविजन टू क्रिएट सच अकाउंट इन बिटवीन दिस रेंज। एम आई क्लियर? हाँ। अभी सिमिलरली एसेट के बाद क्या आता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होगा, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पोजीशन, लाइक नॉट फ्रॉम दिस पोजीशन, फ्रॉम वन स्टेप अहेड। अभी 9,999 है ना, तो यू नीड टू गिव 10,000, 10,000 टू हाउ मच, जितना यहाँ पे आपने रेंज लगाया है उतना रेंज तक देना होगा, से 10,999। ओके, सिमिलरली एक्सपेंसेस 11,000 से 11,999, रेवेन्यू 12,000, 12,999। नाउ व्हाट आर दिस नंबर, ये नंबर कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट द अकाउंट नेम, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वन अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर इस रेंज के अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो, से फॉर एग्जांपल 11,345, एंड नाउ दिस नंबर इज कमिंग इन बिटवीन दिस रेंज, तो इस जगह पे भी इस 11,345 में भी एक अकाउंट बन सकता है, मे बी मैंने ले लिया फ्यूल एक्सपेंसेस, उसको मैंने इस नंबर के इनसाइड में डाल दिया। माई मेन मोटिव इज टू असाइन वन पर्टिकुलर यूनिक नंबर टू अ स्पेसिफिक अकाउंट दैट विल फॉल अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 11,345 का जो अकाउंट है दैट अकाउंट इज रिलेटेड टू एनी अदर अकाउंट अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस। नो, जिसका जो रेंज है उसी कैटेगरी में उसका अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है,
आपका और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं यहाँ पे सिस्टम में अभी करने वाला हूँ. बट देयर इज वन रेस्ट्रिक्शन फॉर अकाउंट क्रिएशन. व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन? सी, हमने क्या शुरू किया था, 1 से शुरू किया था, 9999. बट द प्रॉब्लम इज you should have a static masking of your account number. Masking मतलब आप मान लो 5 डिजिट का अगर अकाउंट नंबर क्रिएट करते हो, say for example 10,000, then entire range has to be in this particular length only. 10,000 से अगर मान लो मैं 10,999 कर रहा हूँ, then it is valid. Again you need to continue from 11,999. Now this is called about masking. Masking मतलब आप कितना डिजिट का अकाउंट नंबर क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट length of digit should be equally maintained throughout all the category. एसेट के लिए अगर आप 5 डिजिट नंबर मेंटेन कर रहे हो, डजेंट मैटर व्हाट इज द नंबर. या प्लीज टेल मी. Please explain masking again. Masking Yes. means it is validating or defining the length of the account which you are going to use it for any of the category. For example, अगर आप एक अकाउंट जो मेन अकाउंट आप क्रिएट करने वाले हो, लेट मी टेक दिस एग्जांपल, आईटी एसेट. अभी आईटी एसेट के नाम से तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. ओके, इट विल बी डिफाइंड एज एन आईटी एसेट, बट इट विल बी आइडेंटिफाइड विद द मेन अकाउंट नंबर which is going to be deployed in this section. ओके, तो उसके लिए हमें एक लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा. इफ इट इज अ 2 डिजिट नंबर, इफ इट इज अ 1 डिजिट नंबर, वट एवर इट इज. जैसे मान लो मैंने आईटी एसेट के लिए डिसाइड किया 10. सो यू नीड टू मेंटेन दिस लेंथ थ्रू आउट द साइकिल, मीन्स थ्रू आउट दिस ऑल कैटेगरी. अगर आप डिफाइन कर रहे हो 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर, देन यू नीड टू मेंटेन दिस लेंथ ऑफ the account number throughout all the account number that is going to be used for all the category. Am I clear, or is there any doubt still left? Clear. Okay, please tell me clearly guys, because this is a very important concept, and even it's a very delicate also. You need to understand. If there is any 1% doubt also, please let me know. So if you are clear with it, I can move ahead. Please let me know. Okay, I need response from another one. Okay, so let me go ahead and start creating a main account. Before creating a main account, let me go back once again to show you one setup. This is the main account mark. Suppose for example, if I am giving here is 1 2 3 4 5 6. Now why I am using hash? See, main account marks optional. Optional why? Enter the structure that main account must follow when the accounts are created. What is the structure again? Structure is nothing but the length itself which we are going to define. अभी अगर मैं यहाँ पे 6 hashes दे रहा हूँ, hashes represents the number. Okay, what it will do, it will restrict me to create account which is a length of only 6 digit only. 6 digit मतलब मैं अगर obviously 1 सीरीज से शुरू करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6. This is the restriction that will impose on me if I imply this 6 hash main account marks in this section.
अगर मैं इसको अप्लाई नहीं करता हूं, देन आई हैव द फ्रीडम टू मेक एनी लेंथ, and that should be obviously maintained in a unique order throughout the all category. ठीक है ना, मुझे यहाँ पे फ्रीडम दे दिया जाएगा कि मैं उसका 7 डिजिट बनाऊँ, 8 डिजिट बनाऊँ, 10 डिजिट बनाऊँ, वट एवर इट इज। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मास्किंग डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, देन आई ओनली हैव द प्रोविजन टू डिफाइन विद 3 डिजिट ओनली, जैसे 1 1 2 3, उससे सॉरी 1 2 3, उससे ज़्यादा मैं और डिफाइन नहीं कर पाऊंगा वाइल क्रिएटिंग द मेन अकाउंट। ठीक है, लेट अस ट्राई। यहाँ पे मैंने 3 हैश दे दिया, व्हाट इट रिस्पॉन्स। अभी अगर मैं क्रिएट करता हूँ 1 1 2 3 4, it is not going to accept when I will save it. See, the main account does not match the main account mask, enter a new main account। मतलब मैंने वहाँ पे उसको लिमिटेशंस दिया था ओनली 3 डिजिट का 1 2, मतलब यहाँ तक ही मेरा लिमिटेशंस था, बट मैंने उसको क्या किया, एक्सपांशन कर दिया था। फॉर दिस रीजन ओनली व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सेव दिस मेन अकाउंट इट वाज थ्रोइंग मी एन एरर। अगर इसको मैं 100 कर देता हूँ, व्हाट इट will it accept? So other field must be filled in. Let me take the example, I will delete it। So it will accept। Why? क्योंकि मेरा जो मेन अकाउंट मास्किंग का जो वैलिडेशन है दैट वाज लिमिटेड टू 3 डिजिट ओनली। फॉर दिस रीजन ओनली this main account has accepted my value। Now let me delete this and let me try to explain in a better way। अभी मेन अकाउंट जब हम लोग क्रिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन द चार्ट ऑफ अकाउंट नेम and we will remove this main account mask। We don't want any kind of limitations। Then we will come to this main account section, we will click on new। जैसे ही मैं न्यू में क्लिक करूंगा, it will redirect me to a new form, and now for first time this form will be enabled। Like what are the mandatory field that you need to fill up? This main account number and the main account name, means this particular number that we are going to provide in this section, what account is representing and what type of account that should be defined in this main account type। Say for example, let me create one main account for asset category। First let me define the asset category। Okay, let me delete this so that it should not create any confusion। For asset category we are going to create with for example 1 lakh। Let me take account as 2 3 4 5। For 1 lakh I am going to create one main account first of all। So let me define my main account number 1 2 3 4 5। और गाइज ऐसा है कि यहाँ पे मैंने इट्स टोटली माई चॉइस, मैंने यहाँ पे 1 लाख दिया। यू कैन डिफाइन एनीथिंग। ओके, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। आप अपने हिसाब से नंबर डिफाइन कर सकते हो। फॉर माई कन्वीनियंट पर्पस आई यूज 1 and 30 40 50 as per my wish। Okay, the bigger the number the better to maintain the accounts। इट्स अगेन एक्सपीरियंस्ड थिंग, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना डिजिट का मेन अकाउंट नंबर देने से इट बिकम मोर इजियर टू मेंटेन ऑल दोज अकाउंट्स। So let me define the name of this main account first of all। Let me take it as a cash account or petty cash account, whatever you say। कैश अकाउंट देने के बाद अब ये कैश अकाउंट किस टाइप का है? Obviously cash account is a asset account, so I need to define the type of account from this section, main account type, profit and asset account। See, अभी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको all types of अकाउंट टाइप दिख जाएगा। क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट वन इज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी। These are the 4 main category that a main account should be assigned to।
और उसके बाद बाकी जो है वो सारा सपोर्टिंग रोल पे है, ठीक है, जैसे फिल्म में होता है ना, लीड रोल एंड सपोर्टिंग रोल. सो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, टोटल, रिपोर्टिंग, कॉमन, दीज आर ऑल इन अ सपोर्टिंग रोल. उसका भी मैं बताऊंगा कि एक एक का यूज क्या होता है. बट if you are defining a main account, then you need to provide one account type. So first of all, I have created one cash account, and this cash account will be defined as an asset account type. और जैसे ही asset account हो गया, which means if anything comes in, it will be debited to our account. ठीक है, कुछ अगर आता है then it will be represented as a debit. ओके, ये तीन पैरामीटर इंपॉर्टेंट है. ये जब हम लोग दे देंगे, we will save it. Once we save it, it will be listed down in this left workspace area. Next, we need to define another account. Say for example, पहला क्या था? What was the length? 1 2 3 4 5 1 lakh. So I will define 1 lakh 1. इसमें मैं क्या देने वाला हूँ? Let me take another account. That's a bank account, क्योंकि bank account is also a mandatory asset account. हर कंपनी का बैंक अकाउंट होता है. तो बैंक अकाउंट रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा, ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन दिस मेन अकाउंट और इन दिस लेजर अकाउंट. क्लियर है? हाँ. ओके, यू हैव वन मोर क्वेश्चन. And after financial year ends, it will automatically start a new series number. Yeah, it will not automatically create, but you can reuse all those numbers again defining the new number. क्योंकि जब आप फाइनेंशियल ईयर एंड करोगे ना, देर इज अ प्रोसेस ऑफ बैलेंस कंसोलिडेशन, फिर फ्लशिंग आउट एवरीथिंग. आपका सारा जो अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, एंड इट विल बी कंसोलिडेटेड इनटू वन सिंगल अकाउंट, एंड ऑल दोज बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर. उसके बाद आप दोबारा से सारे अकाउंट को नए फाइनेंशियल ईयर के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं. गॉट इट? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से आपका एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, देन अगेन न्यू फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट? तो दैट न्यू फाइनेंशियल ईयर विल बी नोवेयर कनेक्टेड टू द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि उसका बैलेंसेस ऑलरेडी आपके पास ट्रांसफर हो चुका होगा थ्रू सम ओपनिंग बैलेंसेस. जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल लेजर कैलेंडर में हम लोगों ने देखा था पीरियड्स में कि देयर विल बी टू एडिशनल पीरियड्स. वन विल बी फॉर क्लोजिंग पीरियड एंड अनदर इज फॉर ओपनिंग पीरियड फॉर द नेक्स्ट फिस्कल कैलेंडर और फिस्कल ईयर, जहाँ पे आपका जितना बचा खुचा बैलेंस है वो सीधा उठ के एक ही अकाउंट में चला जाएगा. तब ये सारा डिफरेंट मेन अकाउंट्स का और कोई रोल प्ले नहीं करेगा फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर. देन इट विल बी अगेन अ फ्रेश अकाउंट एंड यू कैन यूज इट अगेन फॉर अ न्यू पर्पस. ओके, सो सेकंड एसेट अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, और ये हो गया एसेट टाइप. जैसे आप यहाँ पे एसेट सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली ये डेबिट पे आ जाएगा. दिस विल बी ऑटो पॉपुलेटेड. अगर आप देखो यहाँ पे लाइबिलिटी देते हो, देन व्हाट इट विल कम? इट विल कम एज अ क्रेडिट, क्योंकि वो हमें पे करना है. सो हमारे अकाउंट से जब पैसा जा रहा है, इट विल रिप्रेजेंट द क्रेडिट. ओके, तो लेट मी कन्वर्ट इन एसेट अगेन. करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ. नाउ न्यू पे क्लिक नहीं किया था क्या? आई नीड टू क्लिक ऑन न्यू. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ये बैंक अकाउंट आ गया, मुझे प्रीवियस वाला क्लिक करना है. व्हाट वाज द प्रीवियस अकाउंट? कैश अकाउंट. इट वाज द एसेट अकाउंट. चलो लेट मी सेव इट. तो क्या करना पड़ता है? मैंने क्या मिस्टेक कर दिया? एवरी टाइम आई सेव, देन आई नीड टू क्लिक ऑन न्यू. ठीक है. सो फॉर द टाइम बिंग मैं अभी एसेट अकाउंट 2 क्रिएट करके रखता हूँ. अभी टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होगा एडिशनल अकाउंट्स का, सपोज मुझे बीच में ज़रूरत हो गया कोई दूसरा अकाउंट, देन आई कैन डायरेक्टली कम टू दिस फॉर्म एंड क्रिएट ए न्यू वन बाय फॉलोइंग दिस सीरीज. बट अगर मैं अभी 1002 से ही दूसरा लाइबिलिटी अकाउंट बनाना शुरू कर दूँ, देन आई डोंट हैव द प्रोविजन टू क्रिएट asset account
which might require in a later stage. तो मुझे एक गैप छोड़ना पड़ेगा in between asset and liability account. तो मैं कितना गैप छोड़ूंगा? It again depends on the organization volume and organization density of data. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख है, तो लेट मी स्टार्ट द लाइबिलिटी अकाउंट फ्रॉम 2 lakhs. तो मतलब मैंने एक 1 लाख का गैप दे दिया है कि मैक्सिमम ऑफ 1 लाख अकाउंट्स कैन बी, so maximum of 1 lakh accounts can be accommodated into पर्टिकुलर एसेट अकाउंट. इसके लिए मुझे एक गैप छोड़ना होगा, और गैप छोड़ने कैसे कैसे छोड़ेंगे? बाय डिफाइनिंग द न्यू कैटेगरी मेन अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट नंबर. तो मैंने 2 lakhs दे दिया. सो इन बिटवीन 1 lakhs and 2 lakhs देयर विल बी ए गैप ऑफ 1 lakhs. ठीक है. तो 2 lakhs में मैं क्या करूँगा? अभी लाइबिलिटी अकाउंट बनाना शुरू करूँगा. सो लाइबिलिटी अकाउंट मुझे जितना याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट में एक बना दूंगा, मतलब जो भी क्रेडिटर्स रहेगा उसके अकाउंट में पैसा मुझे जमा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जिनसे मैंने क्रेडिट लिया हो. इट विल बी माई लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे पैसा देना होगा वहाँ पे. जैसे मैं यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट करूँगा, अनलाइक इट वॉज डेबिट इन टाइम्स इन एसेट अकाउंट, इट विल बी क्रेडिट अगेन फॉर दिस लाइबिलिटी अकाउंट. ठीक है. लाइबिलिटी जैसे ही आप मेन अकाउंट टाइप सिलेक्ट करोगे, it will automatically instruct the main account that it is a credit account. Done. Need to save. Let me click on new. Let me create another liability account. It will be interest payable. मे बी मुझे बैंक को अगर इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि मेरा पैसा बाहर जा रहा है, सो I may need one account, such account, where I can record all those transactions. Okay. So after defining the name, I need to select the type, that is liability. Again, it will be a credit account. So I will save it. And another, okay, let me keep this liability account with the 2 account. अभी मैं फिर next create करने वाला हूँ the third category, that is the expenses account. Expenses account मेरा क्या होगा? 3 lakhs. मैंने क्या किया है? सारे कैटेगरी के बीच बीच में 1 लाख का डिफरेंस दे दिया. ओके. सो 3 lakhs. मैं इसका नाम दे रहा हूँ एक्सपेंसेस से बेसिक एग्जांपल रेंट अकाउंट. इट विल बी अगेन एक्सपेंसेस अकाउंट. सो एक्सपेंसेस मीन्स मनी इज गोइंग आउट, सो इट विल बी डेबिट. सेव. लेट मी, अभी के लिए मुझे एक्सपेंस और मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आई विल लीव इट ब्लैंक. फ्यूचर के लिए छोड़ दूंगा अगर कोई ज़रूरत होगा तो. Let me move to new category, revenue, 4 lakhs. So what I am doing, asset account मैंने कहाँ तक रखा है? 1 lakh से 1,99,999. That is a asset range. मतलब यहाँ तक जितना भी 1 lakh का डिफरेंस है, all that 1 lakhs can be used to accommodate the asset account if required. मैंने क्या किया? liability का भी सेम कॉन्सेप्ट रखा है, that will be used again from 2 lakhs to 2,99,999. Same I will do with expense account from 3 lakhs to 3,99,999. And for revenue, or another name is income. Okay, कुछ भी बोल सकते हो, there is no harm in it. I will use 4 lakh to 4,99,999. Now I will quickly ask you a very, very simple question. Is there any doubt? My one basic and simple question. Till the time we have covered up.
अकाउंट नंबर को लेके, कैटेगरीज को लेके, अकाउंट नंबर क्रिएशन को लेके? नहीं, अभी तक कोई डाउट नहीं है। ओके, सौरभ, यू आर क्लियर विद दैट? या प्लीज 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 टेल मी. या यू कैन ऐड योर कैश बुक टू अ चार्ट ऑफ अकाउंट. डिपेंड करता है वो कौन से कैटेगरी में जाएगा. एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई. सपोज एक क्लाइंट है, आपको दे दिया है, अकाउंट का नेम हो सकता है कैश बुक. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई फॉर व्हाट पर्पस दिस कैश बुक इज यूज्ड फॉर. देन आपको क्या करना होगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी डिफाइन करना होगा. से फॉर एग्जांपल मेरा कैश बुक हो गया है, लेट मी टेक एन एग्जांपल, इट इज़ एन एसेट अकाउंट. ठीक है, आई विल गो टू एसेट अकाउंट and I will check what is the range defined. 1 lakh से 1,99,999. Then I will go to system. यहाँ तक मैं सेव करूँगा. अच्छा चलो मैं इसको बैक करता हूँ. I will go to system. Okay, system पे जाने के बाद I will check what are the accounts that has been created. See, my main account has been created. तो मैंने already पता लगा लिया है कि मेरा asset category आ रहा है 1 लाख से 1,99,999 तक. But there is only 2 asset account that has been created till now. तो आप क्या कर सकते हो? You can go to new. You can define the range again. Click on new. कहाँ तक हुआ था? 1,01,000. तो आप दे सकते हो 1,02,000. 1 1 2 3 4 2. You can name it as cash book, and you know this cash book is coming under or falling under asset category. You can define that and click on save. In a similar way, if it is coming under expenses or liability or revenue, whatever it is, you can check the category, define the number, and use it in the system. It all depends on what kind of and what type of accounts you are using in your system. And all this will be provided to you by your own client only. आपको खुद से अकाउंट डिफाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ डिफाइन करना है द नंबर, अकाउंट नंबर, और वो कौन से कैटेगरी में गिर रहा है. यू नीड टू थिंक ऑफ. होप एम आई क्लियर? Done. So let me go ahead with the final touch. Like I think I have messed out the revenue account. Let me create it for 1 2 3 4 5. The revenue can be give me any idea, guys, or let me think of it. Or sales. Okay, sales made, right? सेल्स में क्या हो रहा है, जितना सेल होगा उसका पैसा हम लोग का अकाउंट में आने वाला है. दैट इज आवर रेवेन्यू ओनली. सो वी विल मेक इट इनसाइड आवर रेवेन्यू. क्लियर? चलो एक ही अकाउंट में बना के रखता हूँ फिलहाल के लिए. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अभी मैं बैक करता हूँ तो आई कैन सी दैट माई अ गुड रेंज ऑफ मेन अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है. व्हाट इफ आई नीड टू क्रिएट वन specific main account that will total all the balances for particular one category. मान लो एसेट अकाउंट में जितना भी अकाउंट है वो सारे अकाउंट का जब हम कंसोलिडेशन अमाउंट एक टोटल करके सम अप करके लाएंगे तो उसके लिए तो मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा ना.
सो दैट मैं अपना सम को उस अकाउंट पे लेके आ सकूं या फिर डिफाइन कर सकूं. एम आई राइट? Suppose my asset account has more or less 34 different transactions with जो भी अमाउंट है प्लस और माइनस. ठीक है. अब ये जो प्लस और माइनस है इसका जो एक सम टोटल बनेगा, दैट सम टोटल शुड कम ऑन अ डिफरेंट अकाउंट. मतलब वो सिर्फ एक टोटल का ही अकाउंट बनाना होगा. मतलब लाइक आई वांट टू क्रिएट a separate account for all the sum total of my different account that is lying inside one particular category. Then what we can do, we can create a special account, main account, that will represent only total for that particular category. समझ में आया? Are we clear? हाँ. That thing can also be done. कैसे करेंगे? अभी न्यू में क्लिक करेंगे. So what I will do, I will click on new. Let me define the purpose or define the objective. मुझे एसेट कैटेगरी का एक टोटल अकाउंट बनाना है. जो एसेट कैटेगरी में जितना मेन अकाउंट होगा सबका सम टोटल उस पर्टिकुलर अकाउंट पे आना चाहिए. देन हाउ एंड व्हाट आई विल डिफाइन द अकाउंट नंबर. मीन्स लाइक मैं अकाउंट नंबर कैसे डिसाइड करूँ कि क्या दूँ यहाँ पे. ऑब्वियसली व्हाट वाज माय रेंज फॉर एसेट टोटल. ये जो हमने एसेट कैटेगरी बनाया है इसका रेंज मैंने क्या डाला था, 1 लाख से 1,99,000. दैट मीन्स जो मेरा एकदम वेरी फर्स्ट अकाउंट होगा उसका अकाउंट नंबर मैं 1 लाख दे सकता हूँ और उसका जो सबसे लास्ट अकाउंट हो सकता है दैट कैन बी डिफाइंड एज 1,99,999. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो लास्ट, बिकॉज दिस इज द लास्ट अकाउंट ओनली, क्योंकि ये टोटल अकाउंट है, उसके बाद तो और कुछ आएगा नहीं. Then what I will do, I will take the last number as a reference and I will use it for my total account. Asset total मतलब इस asset total के बाद और कोई main account create नहीं होने वाला है. ठीक है. आई एम जस्ट डिफाइनिंग द नंबर. इससे पहले जो 1,99,998, 97, 96 ऐसे करके टिल हाउ मच 1,03,000 तक ब्लैंक स्पेसेस है. The more you add the account, more you perform transaction, all the total will be dynamically calculated in this asset total. Am I clear? एक बार फिर से समझना चाहता हूँ. हम लोगों का एसेट टोटल का रेंज क्या है, 1 लाख से 1,99,999, राइट. मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये 1 लाख जो फर्स्ट नंबर है दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्स्ट अकाउंट जो हमने यूज किया 1 लाख कैश अकाउंट. ऐसे करके अभी मेरा सीरियल कंटिन्यू होगा 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000, राइट. एंड व्हाट इज द लास्ट लिमिट ऑफ दिस एसेट अकाउंट. अगर लास्ट अकाउंट कुछ भी क्रिएट करूं तो लास्ट कहां तक क्रिएट कर सकता हूं, 1,99,999, राइट. यस और नो? हाँ, यस. ओके. सो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो मेरा लास्ट अकाउंट होने वाला है दैट शुड कम अप एज ए टोटल एसेट अकाउंट. मतलब जो टोटल रिफ्लेक्ट करने वाला है जिस अकाउंट पे फॉर एसेट कैटेगरी, दैट शुड बी द लास्ट अकाउंट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो मेरा लास्ट डिफाइंड रेंज है, मैंने तो रेंज डिफाइन कर लिया. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द लास्ट नंबर, use it as a main account number, and I will define the main account number as asset total. Simple. Now the question comes like, अगर मुझे अभी बीच में कोई अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं. ऑब्वियसली आप कर सकते हो, आराम से करो. उसके लिए आप 1,03,000 से शुरू कर सकते हो, 1,04,000 से, फिर 1,05,000, 6 ऐसा करके आप सारे जितने नंबर्स होंगे
टिल 1,99,998 वहां तक आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ। फाइन। अभी ऐसे टोटल के बाद इसका कैटेगरी क्या होने वाला है? एनी आइडिया? यहाँ पे आपका कैटेगरी होने वाला है टोटल। अभी एसेट नहीं होगा क्योंकि ये टोटल कैटेगरी का अकाउंट है। इसका काम होगा सिर्फ टोटल करके लाना। सो आई विल मार्क इट एज ए टोटल मेन अकाउंट टाइप। तो मेन अकाउंट टाइप क्या हो जाएगा? ये टोटल मेन अकाउंट टाइप हो जाएगा। लेकिन थिंग्स डजंट एंड अप हियर। यहाँ पे टोटल डिफाइन करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस टोटल। जैसे ही मैं यहाँ पे टोटल पे क्लिक करता हूँ, इट विल टेक मी टू अनदर शॉर्ट फॉर्म। टोटल जब मैं क्लिक किया हूँ तो इट विल आस्क मी द रेंज, मतलब कौन से वैल्यू से कौन से वैल्यू तक ये टोटल करेंगे। सो आई विल डिफाइन फ्रॉम 1 लाख। मुझे 1 लाख वाले मेन अकाउंट से 1 लाख 99,998 1 लाख से 1,99,998 जितना भी मेन अकाउंट होगा वो सारे का टोटल चाहिए इन दैट 1,99,999 मेन अकाउंट पे। क्लियर और कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है। क्लियर है? हाँ। ओके। लाइकवाइज अभी हम लोग क्या करने वाले, जैसे एसेट का टोटल बना लिया, वी विल डू द सेम थिंग फॉर एक्सपेंस ऑल्सो, लाइबिलिटी ऑल्सो एंड रेवेन्यू ऑल्सो। तो चलो नेक्स्ट कौन सा है? 2 सीरीज का। 2 सीरीज में कौन है? लाइबिलिटी है। सो लेट अस गो 2,99,999। इसका भी क्या होगा? लाइबिलिटी टोटल। एम आई राइट? हाँ। इसमें मैं कौन सा कैटेगरी दूंगा? दिस इज ऑल्सो एन अगेन टोटल कैटेगरी and I will go to total. I will define the range from 2 lakhs to 2 lakh 99,998. I will save it, go back, दोबारा से मैं नया क्लिक करूंगा। अभी किसका होगा? एक्सपेंसेस का होगा 3,99,999 में सबसे जो लास्ट वाला रेंज हो रहा है, सी ऑल माई लास्ट मेन अकाउंट रेंज आई एम यूजिंग। लाइबिलिटी का मैंने यूज़ किया 2,99,000, 3,99,000। सिमिलरली मैं रेवेन्यू के लिए भी 4,99,000 यूज़ करूँगा। द लास्ट मेन अकाउंट ऑफ माई रेंज फॉर टोटल अकाउंट। एक्सपेंस टोटल यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ टोटल। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सम टोटल पे। आई विल डिफाइन द रेंज 3,99,998। Save, back, and last but not the least obviously 4,99,999। इसका क्या होगा? रेवेन्यू टोटल, कैटेगरी विल बी टोटल, सम टोटल 4 लाख, यहाँ पे 4,99,998। सेव। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बेस कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, मेन अकाउंट्स कुछ डिफाइन कर दिया। आई नो माई रेंज। अब उसका रेंज का जो लास्ट है उसमें मैंने एक टोटल अकाउंट सबके लिए अलग अलग बना दिया। तो जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पे जिसका सम टोटल होगा, जो भी सम टोटल बनता रहेगा, all the sum total will get reflected into this particular total account. So let us see what we have created till now. So these are the main accounts that we have created. And again, main account is nothing but a ledger account.
which will be used for particular transaction that needs to be done for our organization. ठीक है? Once done, click on save and your chart of account will be created. उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली जब चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यू नीड टू गो टू जनरल लेजर, लेजर सेटअप, गो टू लेजर फॉर्म. अभी आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर दो. व्हाट वाज योर चार्ट ऑफ अकाउंट? एलएनटी चार्ट ऑफ अकाउंट. once defined, click on save. So एक ऑप्शन दिखाई देगा, द फिजिकल कैलेंडर हैज बीन अपडेटेड. क्यों अपडेटेड बोल रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इसको लिंक नहीं किया था, जबकि अब हमने लिंक कर दिया इस एंटिटी के साथ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपका कैलेंडर अपडेट हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर लीगल एंटिटी. नाउ यू शुड रन और रिकैलकुलेट लेजर पीरियड. मतलब लेजर पीरियड्स को थोड़ा सा रिकैलकुलेशन करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म दिस एक्शन. तो यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट क्लिक ऑन इट. सो यहाँ पे आप रिकैलकुलेट कर दो, ओके कर दो. इसको आप बैकग्राउंड पे भी रन कर सकते हो, जो हम लोग इसको बैच जॉब बोलते हैं. सो बैच प्रोसेसिंग में अगर लगा देते हो, यस, इट विल डू द प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर स्क्रीन, सामने नहीं. और अगर सामने होगा तो यहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन आएगा. एक लोडिंग ऐसा होता रहेगा कि प्लीज़ वेट फॉर योर फॉर द प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड. तो मैं ओके कर देता हूँ. तो ये इज डायरेक्ट टू द बैच व्यू. जैसे ही ये बैच रन होता रहेगा, पीछे में बहुत सारा टास्क लगा हुआ है, वन बाय वन ऑल दोस बैच जॉब्स विल बी परफॉर्म्ड. तो जैसे ही इसके बारी आएगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपना करके ओके करके छोड़ देगा. So in that way, now we can say that our entity is ready to perform some kind of journal entries or transactions, whatever you say. But still it is not ready क्योंकि हमने अभी तक account structure create नहीं किया. तो next session we will see what is a financial dimension, और financial dimension के साथ account structure को कैसे हम लोग link करेंगे with the help of our main account that has been created in chart of account. ठीक है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज करके हम लोग डायमेंशन कैसे क्रिएट करेंगे एंड हाउ वी कैन लिंक अप और वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर आवर एंटायर प्रोसेस दैट विल बी डिफाइंडिंग एज एन अकाउंट स्ट्रक्चर. ठीक है, और उसके साथ साथ मेन अकाउंट में भी कुछ एडिशनल पॉइंट है, वी विल ऑल्सो गो थ्रू इट. जैसे मैंने अभी तक ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, वी विल सी व्हाट दिस ऑप्शंस plays a significant role in main account. Okay, so for today we are winding up the session. Till then, if you are having any query, please do let me know.